I'm very pleased that you all met my expectations. Actually, I was not planned to deliver such kind of a presentations here because it was planned in a very short time. And I realized that there is an importance in India that we have to connect science from Germany and we have to import the technology in India because we always dialogue that we can manufacture, we have a manufacturing capacity, but in reality we are still have a lot of gaps. That's why to fill the gaps, we really need to import the technology from our neighboring and partnership countries. That's why I organize these things that you all have the visibility, how we can achieve this milestone so that we can improve the healthcare ecosystem, because COVID-19 took millions of lives all over the world, even doctors, pathologists, policy makers, even ministers, they did not save their life during the COVID-19. The reason was that we were not prepared. We had no actual diagnostic that really needs to screen the patient, and also the vaccines or therapeutics we have to deliver to the patient, not only into the cosmopolitan cities but also into the remote areas. So that's why I really thought that we should organize such kind of thing. But if you find any kind of lack in laxity in the organization, I really apologize that we did not make at that level or excellency, but we will try to follow. You don't have to deal with. If pandemic hits, how you can wait for 12 hours? This is a very, very long time. That's why you have to screen the patient immediately that somebody is infected or they are not infected. So 30-minute PCR technology that is a such as CT scan, MRI, and also I am very expert in the regulatory affairs because India and Germany needs to be compliant in the regulatory matters. We started also immediately to develop our own quality management system because quality is the key for infectious disease. We are selling our products to laboratories that provide results to patients. And it is always important that the patient, so all of us, could rely on the outcome. So therefore, this was always important. And then in 2018, we launched our first product. As you could see, from 2015 to 2018, it's a long-lasting time, but we invest this time to develop the basis of all of our products, the chemistry, what the technology that makes our assays work. As I said, we try to speed it up. In 2020, or with the pandemic, the anchor diagnostics got some boost. So we have to focus on COVID-19 detection. At this time, we did nothing else than COVID. So there was no possibility to develop other products. On the other hand side, we learned a lot regarding the production and the acceleration capacity. Very much for this field introduction. Before I start, I'd like to first of all thank Dr. Alam and his teams, both in Delhi and Hyderabad, for this kind hospitality. It has been a real experience for us to spend this entire week from Sunday to Sunday here in this country. I know it's not enough. Everybody tells us this is a major market, this is a major country, it's very vast, it's very large. You need to spend at least 2 weeks to go to Mumbai and other places. I promise we'll come back at some point and then also see other places, but it was a truly impressive experience already now. We've had the privilege to talk to a number of people in prestigious organizations and institutions, and we're impressed by the experience, by the great questions that we were approached with, also some challenges that we were approached with. So we really appreciated that, and I think it's worth maybe repeating that at some point in time. Okay, you already told the audience that by education I'm also a virologist, and I'm very proud to have joined this company approximately 2 years ago, and helping the organization Anchor Diagnostics to expand its footprint all across the globe and
This is the reason also, among others, why we're here to talk to Dr. Alam and his team in Diagnomed and Diabetics in Hyderabad to see how this can be working, how we can jointly, bring our technology to market. पीछे है भैया, थोड़ा थोड़ा पीछे। मैडम आपका हाथ आ रहा है। Wait. इंतखाब आलम। सर, आज ये प्रोग्राम है आपका, जिस तरह प्राइवेट के बारे में बता रहे हैं, क्या करना चाहिए, कितना आने वाले फ्यूचर में कितना लाभदायक रहेगा? ये तो आज से स्टार्ट करना चाहिए हमें, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी बहुत ही एडवांस है और अभी जो है इसकी ज़रूरत है हमें। अगर ये नहीं रहेगा तो हमारे पास कोई डायग्नोसिस नहीं है और हम एक दूसरे को ट्रांसफ़र करते जाएंगे, एक बीमारी दूसरे में चला जाएगा। तो उसको रोकने के लिए पेंडेमिक जो होता है ना, जो कोविड-19 जो आया था, उसमें हमारे पास ये टेक्नोलॉजी नहीं था जल्दी से रिजल्ट देने वाला। ये टेक्नोलॉजी अगर नया रिजल्ट देगा 30 मिनट में, 40 मिनट में, तो हमारा जो है ट्रांसफ़र नहीं होगा, डिजीज जो है एक जगह से दूसरी जगह नहीं है। तो सर, ये जो पहले सर्विस रिपोर्टें आती थी तो काफ़ी टाइम लग जाता था आने में, तो सर अब जो नई जो तकनीकी आ रही है, तो सर इसमें कितना सुधार होगा? आने वाले टाइम में वैक्सीन होगा तो कितना लाभ होगा? ये वर्ल्ड का सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी है। अभी तक इसकी कंप्यूटर नहीं है, किसी ने बनाया नहीं है इस तरह की टेक्नोलॉजी। तो हमें पहली बार जर्मनी से लेके आ रहे हैं और जर्मनी मेडिकल साइंसेज के इनोवेशन में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रखता है। जर्मनी की कंट्री जो है, तो वो जो है हमें जो टेक्नोलॉजी दे रहा है इंडिया को, उससे जो है हमारा रिजल्ट एक घंटे के अंदर में मिल जाएगा, 1 घंटे से नीचे में मिल जाएगा। जो कि अभी तक जो जितने भी डायग्नोस्टिक लैब है वो 12 घंटे भी लगाते हैं, 3 घंटे भी लगाते हैं, 5 घंटे भी लगाते हैं, जो कि हम 1 घंटे का रिजल्ट दे रहे हैं। ये बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी। इंडिया में जाने का भी क्या प्रोसेस है इनका? इंडिया का प्रोसेस है कि ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया से लाइसेंस लेना पड़ता है। ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया इसकी क्वालिटी चेक करती है और बहुत सारे टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स देना पड़ता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। ड्रग कंट्रोल तो सेडेस्को बोलते हैं। आपने किसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के किसी अधिकारी से, किसी मिनिस्टर से भी आप बात चल रही है? हाँ, मेरी ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया से इवेल्युएशन हुआ है हमारे डॉक्यूमेंट्स का और उन्होंने हमें लाइसेंस दे दिया है। अच्छा। तो अब जो हम रेडी हैं, वी आर रेडी टू ब्रिंग दिस टेक्नोलॉजी टू इंडिया and integrate into the diagnostic laboratory. We are ready. सर, कंट्री से अभी इंडिया के अंदर आपने कितने स्टेट्स में अभी अपनी ब्रांचेस खोली हैं और रिसर्च करने का क्या अभी तरीका है? वैसे हमारा फुल कवरेज इंडिया, पूरा होल इंडिया रहेगा कि जब बेनिफिट देंगे तो सबको देंगे ना, गांव हो या शहर हो, बड़े बड़े सिटी हो, इससे हमें कोई नहीं है। हर जगह टेक्नोलॉजी हम ट्रांसफर करेंगे और गांव-गांव तक पहुंचाएंगे। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में आपका क्या? गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा डिमांड है इसका, जैसे एम्स है या उसी तरह से मुंबई के कोकिलाबेन हॉस्पिटल है, सब बड़े बड़े हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा डिमांड है। जैसे गरीब आदमी को बहुत नीडी है। गरीब आदमी के लिए हम सोच रहे हैं कि कम से कम पैसे में उसका टेस्ट हो जाए, है कि नहीं? है कि नहीं? कम से कम करेंगे तो। आयुष्मान कार्ड का क्या बेनिफिट है? आयुष्मान कार्ड अप्लीकेबल होगा अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हैं टेस्टिंग के लिए, तो आयुष्मान कार्ड वहाँ पे अप्लीकेबल होगा। आप दिखाएंगे तो ये टेस्ट फ्री में हो सकता है। ठीक है, थैंक यू। अच्छा है, सस्ता है, बहुत ही अच्छा है और इससे जो हमारी सारी बीमारी
मतलब प्रिवेंट हो, गाने पे उम्मीद है। डिजीज विल बी कंट्रोल, प्रिवेंटेड, पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस विल बी मेट। और मोदी जी का हमारा पूरा है कि नहीं, मोदी जी अपने पूरे यूरोप से पूरी अच्छी कोलाब्रेशन कर रहे हैं बिजनेस के ऊपर, टेक्नोलॉजी। तो मोदी जी के जो एम है हम पूरा करेंगे, यूरोप से टेक्नोलॉजी को जोड़ेंगे और उनको हम दिखाएंगे कि हम इंडिया के पॉपुलेशन पे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, ऐसे ही आप अच्छा काम करते हैं। थैंक यू।